Question number 8, Hummings Company. Hummings Company is a parent company of a multinational listed group of companies. Hummings Company uses dollar as its functional currency. Hummings Company acquired 80% of equity shares of Crochet Company on 1st of January 14 and 100% of Coavar Company on the same date. The group's current financial year end is 31st of December 14. ये चलते हैं बेटा और कम कर देता हूँ मैं इसको. Draft explanatory notes to the directors of Hummings Company addressing the following: how the functional currency of crochet should be determined. So, according to IAS 21, if the effects of changes in foreign exchange rates, IAS 21 के हिसाब से functional currency, हमें functional currency बताना है ना? Yes, a functional currency is a currency which the company uses in its day-to-day operations. A functional currency is defined as a currency uh, in which whose primary economic environment, sorry, functional currency is the currency in which the primary economic environment in which the company operates. The primary economic is the primary economic environment in which the company operates. उसके बाद हाँ, a functional currency should usually be determined on the same base. क्योंकि देखो ये चीज ना क्वेश्चन नंबर 1 में आई है, मतलब इसमें सब्सिडरी वगैरह होगा. तो ऐसा बोल सकते हैं कि a subsidiary should usually select as the same functional currency as that of the parent if the if the subsidiary has high levels of transactions with the parent, and if the subsidiary uh, operates as an extension of the parent and is dependent upon the parent. Uh, and then there are certain primary and secondary factors that also should be taken into consideration. If if the same currency as that of the parent is not being chosen, then there are certain primary and secondary factors that should be considered, which include. भी प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या आता है अपन वो पहले बता देते हैं इन लोगों को, है ना? तो प्राइमरी फैक्टर्स में क्या आता है? हाँ, प्राइमरी फैक्टर्स में फर्स्ट वी विल से द करेंसी दैट इन्फ्लुएंसेस द सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द करेंसी दैट इन्फ्लुएंसेस द मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट of the goods and services, the currency in which the competitive forces and regulations that influence the sales price of the goods and services. तो ये अपन बता देंगे हमारे प्राइमरी फैक्टर्स. एंड देन हम हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स बताएंगे इन विच द सेकेंडरी फैक्टर्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग आर जनरेटेड एंड द करेंसी इन विच द द रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड. ये अपन बता देंगे. सो अभी यहाँ पे देख लो. क्रॉचेट फंक्शनल करेंसी. हेड ऑफिस ऑफ क्रॉचेट इज लोकेटेड इन अ कंट्री which uses dinar as its main currency. Head office of Crochet is located in a country in which dinar is main currency. However, the staff is located in a variety of other locations. Consequently, half of the employees are paid in dinars and other half are paid in currency of grommets. तो यहाँ पर इन दोनों में वो चीजें बट रही हैं, बट ठीक है. Crochet company has high degree of autonomy and is not reliant on finance from Hummings company. Nor do sales to Hummings company make a significant proportion of their income. High degree of autonomy. अगर see, Crochet has high degree of autonomy and is not reliant for on finance from Hummings company. So we can here say कि the subsidiary is not dependent upon the parent, and thus it is not compulsory that Crochet should use the same currency as that of the parent, which is dollars. Purchases में देखो, purchases are invoiced in grommets. And therefore Crochet raises more of its finance in grommet. देखो, Crochet का परचेजेस तो इन ग्रोमेट्स में हो रहा है, और ही इज ऑल्सो रेजिंग फाइनेंस इन ग्रोमेट्स. तो ये दोनों ही चीजें वो ग्रोमेट्स में कर रहा है.
सिर्फ सिर्फ ग्रोमेट्स में कर रहा है। उसके बाद कैश रिसीट्स आर रिटेन्ड इन बोथ ग्रोमेट्स है, वो ठीक है। डज नॉट ओन डॉलर बैंक अकाउंट, क्रॉचेट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे प्रॉफिट्स। हाँ ये देखो इन दिनाज, वो लास्ट के दो लाइन ओके, लेकिन जो फाइनेंस का पॉइंट है वो अपना ग्रोमेट्स में हो रहा है, इसके वजह से और फंक्शनल करेंसी विल बी ग्रोमेट्स। बट चेक कर लेते हैं। ये देखो, the functional currency is the currency of primary economic environment in which the entity operates. With a foreign acquisition, consideration should be given as to whether crochet company should adopt the same functional currency as its parent, Hummings Company. However, crochet company appears to be largely independent and so reliant on Hummings Company for either sales or finance. It is not required, therefore, for crochet to adopt the same functional currency as Hummings Company. Crochet Company does not appear to have transactions in dollars or have dollar bank account, and it can be concluded that dollar should not be their functional currency. तो डॉलर तो इनका फंक्शनल करेंसी नहीं है। अभी ग्रोमिट्स क्यों है वो इन्होंने नीचे बताया हुआ है। In determining its functional currency, Crochet Company should consider the currency which mainly influences the sales price of goods and the currency which mainly influences labor and other costs. This is likely to be currency which goods are invoiced in and currency in which costs are settled. The location of the entity's head office is irrelevant, except to the extent that it is likely that the costs of running the head office are likely to be settled in the domestic currency. For Crochet Company, while there are number of transactions in dinars and tax to be paid in dinars, it appears that vast majority of their transactions are in grommets. तो देखो, all sales and purchases are invoiced in grommets as well as approximately half of their staff being paid in grommets. तो अपन जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दे रहे हैं वो भी ग्रोमेट्स में है। उसके बाद funds from finance is raised in grommets, which further suggests that grommets should be chosen as the functional currency of crochet company। ठीक है, तो ये अपना हो गया ग्रोमेट्स क्यों होना चाहिए फिर। तो ये हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन। अभी, how Crochet Company's customer contracts should be accounted for in the consolidated financial statements of Hummings Company, which are presented in dollars for the year ended 31st December 14। अभी हमको बताना है कि क्यों कैसे कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स को अकाउंट करना है। ठीक है, जो डॉलर में रिप्रेजेंट होंगे। The acquisition of Crochet Company. Hummings Company paid cash of $24 million for the 80% holding in Crochet Company on 1st of January 14. Hummings Company has a policy of measuring non-controlling interests at fair value. The fair value of the non-controlling interest in Crochet Company on 1st of January 14 is $6 million. Since Crochet Company has a range of net assets held domestically and overseas, the fair values of the net assets at acquisition were determined in the local currency. Hence, the fair value of some of the assets have been determined in dinars and others in grommets. Okay. The fair value of net assets denominated in grommets at 1st of January 14 was 43 grommets, 43 million grommets. The total fair value of the net assets denominated in dinars at 1st of January 14 was $50 million grommets. Abhi, excluded from these fair values are several contracts with customers of Crochet. These contractual relationships prohibit customers of Crochet from obtaining services from any main competitors of Crochet. They have estimated fair value at 1st of January 14 of $15 million grommets. Hmm. Is this in accordance with IFRS
15 revenue from contracts with customers when the contract with customer is bound to be ordered। अभी इसको अकाउंट कैसे करना है वो इन्हें पूछा है ना, लेकिन सी एक तो श्योर है कि दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट अकॉर्डिंग टू मी एंड शुड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड विद गेन और लॉस बीइंग रिकॉग्नाइज्ड टू द ओसी, ऐसा मुझे लगता है। चेक कर लेते हैं। Customer contracts. The IFRS business combination requires investor to recognize investees' identifiable net assets at acquisition at fair value. To be identifiable, customers either must either be capable of being used or sold separately, or it must arise from legal or contractual rights. A reliable estimate of its fair value is also necessary to be recognized as a separate asset rather than subsumed within the goodwill figure. This is the case regardless whether contracts had been recognized within the individual financial statements of Crotchet or not. The contracts provide Crotchet with legal right to prevent their customers from obtaining goods and services from their competitors, and a reliable estimate of the fair value appears to be obtainable. The contract should therefore be recognized as a separate intangible asset। तो ये एक separate intangible asset की तरह account होना चाहिए। Identifiable net assets should be recognized fair value at the acquisition date. For the contracts, this amount to 15 million. This would be transacted at spot rate of exchange of $1 to 8 grommets। तो इसको एट एक्विजिशन डेट की तरह ट्रीट होगा, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, 1 मिलियन मतलब 1 जनवरी 14 को किया है ना, तो ऑब्वियसली एक्विजिशन डेट पे ही इसको मेजर किया जाएगा। इनिशियली भी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1.85। तो फिर इसी चीज को बाद में ये देखो, इसका एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा जो अपन ओसीआई में डालेंगे। तो ये देखो, द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी एग्जामाइंड टू डिटरमाइन द एवरेज अनएक्सपायर्ड यूजफुल लाइफ एंड amortized over this period. The amortization expense should be translated at average rate of exchange and recorded in the consolidated profit or loss. The carrying amount of the contracts would need to be retranslated at the closing rate of exchange of $1 is equal to 7 grommets with the corresponding exchange gain recognized in OCI। तो इन्होंने वही चीज बोली है कि जो गेन और लॉस पैदा होगा उसको अपन ओसीआई में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। राइट। एक्चुअली हमको है ना इधर ऐसा बोलना चाहिए था कि अगर हम इंटेंजिबल एसेट की तरह उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो देखो ये भी आया था 4 मार्क्स के लिए। तो इसको और एक्सपांड करने के लिए हम वो चार उसके रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज बोल देते, जो यहाँ पर है ना, वो जो है मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। ये देखो, asset is identifiable, controlled by the entity, will generate future economic benefits to the entity, and the cost of the asset can be measured reliably। तो ये अपन अगर बोल देते ना तो आंसर और बड़ा बन जाता। आगे, a calculation of goodwill on acquisition of crochet company in grommets and how it would be accounted for in the consolidated statement of financial position of Hummings company at 31st of December 14 after translation include a brief explanation and calculation of how the impairment and exchange difference on goodwill will impact the consolidated financial statements।
क्या था, ग्रोमेट्स। चेक माय फोन, चेक माय फोन आई गेस। हाँ, अभी एक्विजिशन ऑफ ग्रोमेट के लिए कैश हमें दिया हुआ है 24 में। हमको गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट करना है बराबर, तो अभी अपने को कंसिडरेशन पेड $24,000। उसके बाद Hummings has a policy of measuring non-controlling interest at fair value. The fair value of NCI in Crochet Company on 1st of January 14 was 6 million. Maybe net assets. Since Crochet Company has a range of net assets held domestically and overseas, the fair values of the net assets at acquisition were determined by the local currency. Hence, the fair values of some assets have been determined in dinars and some in grommets. The total fair value of net assets denominated in grommets was 43,000. Okay, 43,000 grommets. And a total fair value of net assets denominated. Okay. Net assets. So for determining the the net assets, we would need to translate the net assets in dinars into grommets first and add them in the remaining net assets from grommets figure. तो 43,000 का ग्रामेट्स तो कंफर्म है, लेकिन जो 50,000 दिनार के दिनार्स है, उसको भी अगर अपने को कन्वर्ट करना है, सो एट एक्विजिशन रेट देखो क्या है, 1 दिनार इज इक्वल टू 2 ग्रामेट्स। यहाँ पे हाईलाइटर कहाँ है मेरा, हाँ, 1 दिनार इज इक्वल टू 2 ग्रामेट्स, सो इट विल बी 1 दिनार टू 2 ग्रामेट्स। तो आंसर जो बनता, अरे कुछ नहीं बता रहे, तो यहाँ पे मुझे मिलता चाहिए ग्रोमेट्स जो मुझे मिलने चाहिए, तो मुझे वो मिलने चाहिए 1 लाख GR। दस माई नेट एसेट्स वुड बी 1,43,000। एक मिनट, यहाँ पे मुझे, मैं यहाँ पे दस द टोटल वुड बी 1,43,000 ग्रोमेट्स। Excluded from these fair values are several contracts with customers of Crochet Company. These contractual relationships prohibit the customers of Crochet Company from obtaining sale। तो ये वाली जो 15 मिलियन है ना, ये भी इसमें ऐड होंगे। 15 मिलियन का जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी इसमें ऐड बैक होगा। तो दैट विल मेक अप फॉर 1,58,000 ग्रोमिट्स, जिनका रेट होगा एट एक्विजिशन डेट 8 ग्रोमिट्स का, डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो 1,58,000 डिवाइड बाई 8,000 गिव्स मी, एक मिनट, 8,000 क्यों किया मैंने, 8 से करना चाहिए था, सॉरी। 1,58,000 डिवाइड बाई 8 गिव्स मी 19,750। तो मुझे गुडविल एट एक्विजिशन जो मिलता है, मुझे वो मिलता है 10,250 का। मुझे गुडविल एक्विजिशन है 10,250। अच्छा, बाय द वे, मुझे ना इन सबको एक बार है ना वापस से
रिट्रांसलेट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गुडविल एट एक्विजिशन इन ग्रोमेट्स भी लगेगा फॉर माई फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आएगा 24,000 into 8, which gives me 1,92,000 प्लस 48,000 माइनस 1,58,000, तो मुझे देता है 82,000। एक बार मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके 82,000 डिवाइड बाई 8 भी सेम फिगर आ रहा है, तो वी हैव कैलकुलेटेड करेक्टली। अभी देखते हैं कोई इम्पेयरमेंट वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। So basically we got goodwill at acquisition as 1,82, sorry, 82,000 in grommets and 10,200 in अपना वो क्या बोलते हैं, डॉलर्स। अभी देखो इम्पेयर हुआ है गुडविल 30% से, तो अभी अब अपने को उसका भी एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। पेयरमेंट। एक्चुअली यू नो व्हाट, वेट, rather than doing this, हमको एक्चुअली एक चीज सबसे पहले करनी है। हमको आई थिंक ईयर एंड पे ना गुडविल एंड एक्विजिशन का जो डिफरेंस है ना, हमें वो पहले निकालना है। हम सबसे पहले वो करते हैं, गुडविल एंड एक्विजिशन का डिफरेंस निकालते हैं। गुडविल एट ईयर एंड, ठीक है ना। अभी देखो गुडविल एट ईयर एंड मेरे पास है 82,000 का। रेट क्या चल रहा है? 7। 82,000 डिवाइड बाय 7 गिव्स मी 11,714। एक्सचेंज गेन और लॉस जो मुझे आता है गेन आता है मुझे 1,464 का। तो मुझे ये फिलहाल गेन आ रहा है एट एक्विजिशन। अभी इसके बाद मैं इसके ऊपर इम्पेयरमेंट चार्ज करूंगा, एंड दैट वुड बी एट द रेट ऑफ 30%। तो मुझे 30% का इम्पेयर करना है। तो 82,000 इंटू 0.3, 24,600 का इम्पेयरमेंट, जो कि मेरा रेट लगेगा। मेरा माय रेट फॉर इम्पेयरमेंट वुड बी द एवरेज रेट। एंड मेरा एवरेज रेट कितना है, वो मुझे शायद दिया नहीं गया है एक्चुअली। बिकॉज फॉर इम्पेयरमेंट ना वी यूज अवर एवरेज रेट, so why have they not given us the average rate? I'm confused about that. शायद बिकॉज इसीलिए कि मुझे इसी 11,714 से इसको इम्पेयर करना पड़ेगा, मे बी दैट्स वाई। 11,714.3, तो आता है 3,514.2। तो इम्पेयर करूंगा गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट 82,000 डिवाइड माइनस 24,600, 7,400, 11,714 divided minus 3,514, which gives me 8,200। तो मुझे फिलहाल ये आंसर मिलता है गुडविल एंड इम्पेयरमेंट के लिए। नाइस सम। तो इम्पेयरमेंट जो हुआ है वो हुआ है -3,514 का, और यहाँ पे मुझे एक्सचेंज गेन और लॉस आया है 1,464 का। तो ये मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ये जो एक्सचेंज गेन और लॉस है, इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? ये देखो डिस्पोजल से तो नहीं मिला है, तो इसको ओसीआई में रिकॉर्ड करेंगे, एंड अपॉन डिस्पोजल इट विल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंड जो 3,514 का इम्पेयरमेंट हुआ है दैट विल बी रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। एक बार चेक कर लेते हैं।
देखो एक्सचेंज गेन और लॉस हुआ 1.64 का, अपने को कितना आया था, आई थिंक सेम ही आया था ना, 1 पॉइंट, मतलब 1464 बराबर। परफेक्ट। आई एम वेड अबाउट द इम्पेयरमेंट रे। देखो ईयर एंड में, हाँ ये देखो सब सेम है, सब सेम है, नाइस यार। चलो, 57,400 डिवाइड बाई 7, 8,200 अपने को मिलता है। इम्पेयरमेंट अपने को -3.51 मिला है, अपने को 3514.2 मिला है। अपन सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इन थाउजेंड्स, ऐसा करके। यहाँ पर जाने दो, यहाँ पर जाने दो, ग्रामर्स में जाने दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। हाँ, हमेशा ये याद रखना कि इम्पेयरमेंट बाद में करते हैं, पहले अपन ईयर एंड का एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लेते हैं और बाद में इम्पेयरमेंट चार्ज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहना है कैंसिल दिस, अरे नहीं नहीं, ठीक है जाने दो, जाने दो। सो अपन ने हमें जो कुछ भी किया ना, दैट वी विल एक्सप्लेन हियर, कि एंड उसके बाद कहाँ जाएंगी चीजें वो सब भी अपन बता देंगे। सो ठीक है, इतना ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विजिशन आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू बोथ इम्पेयरमेंट एंड एक्सचेंज पोर्शन। हाँ, एक्चुअली ये देखो मैंने ऐसा बोला था कि इम्पेयरमेंट को पीएनएल में डालना है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं डालना है, उसको सब अपने को पोर्शन करना है। आई वाज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, 80 to 20% में। तो दैट वी हैव टू स्प्लिट जो एक्सचेंज है ना, वी हैव टू पोस्ट दैट इन ट्रांसलेशन रिजर्व एंड एनसीआई। जो इम्पेयरमेंट है दैट वी हैव टू पोस्ट इन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड एनसीआई। ठीक है ना, बस उतना है, ध्यान में रखेंगे इस सम को क्लोज करते करते। और ये देखो इन्होंने भी यहाँ पे जो 15 ऐड किया ना, इसका भी ध्यान 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 रखेंगे कि यहाँ पे ये 15,000 ग्रोमेट्स जो कस्टमर वियर्ड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट था ना वो, कि कस्टमर किसी और से नहीं ले सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो याद रखें। ठीक है, चलो। हाउ कोएवर कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31st of December 14 के। दिस इज दिस, कुछ और मैंने मार्किंग किया था नहीं, यहाँ पर भी कुछ मार्किंग्स नहीं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ क्वेवर। On 1st of January 14, Hummings Company purchased 100% of equity interest in Quaver Company. Hummings made the acquisition with intention to sell and therefore did not wish to have an active involvement in the business of Quaver Company. Hummings Company immediately began to seek a buyer for Quaver Company and felt that the sale would be completed by 31st of October 14. At the latest, the buyer for Quaver was located in August 14, but due to unforeseen legal dispute over the contingent liability disclosed in Quaver Company's financial statements. The sale had not yet been finalized as at 31st of December 14. The sale is expected to be completed at in early 15. Okay. First of all, Hummings Company purchased on 1st of January 14. Hummings Company purchased 100% of equity and interest in Quaver Company, and thus Hummings Company should treat Quaver Company as a subsidiary. However, further we can see that Hummings Company had actually made the acquisition with the intention to sell, and therefore did not wish to have an active involvement in the business of Quaver. तो अपन ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का निकाल देंगे, इंटेंशन टू सेल द कंपनी। Thus, this was a subsidiary that was occupied with the intention to resale. Therefore, it should be accounted for in accordance with IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations. तो अपन फिर वो, अच्छा कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए अपन actually फटाफट बता सकते हैं वो 5 या 6 पॉइंट्स जो लाइक इन दैट कम इन दैट IFRS 5 का थिंग, कि the sale should take place before 12 months. The management should be committed upon the sale. A significant reversal in the management's decision to sell will not take place. एक्टिव बायर टू लोकेट, वो सब 5 पॉइंट बता देंगे। उसके बाद डिसकंटिन्यूड करके भी बता देंगे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज एज एन ऑपरेशन ऑफ अ मैनेजमेंट व्हेन which has been classified as held for sale or is discontinued, but should meet the following 5 criteria. It should be a separate major line of or geographical area.
Then the subsidiary should be acquired with an intention to resale, and there should be a proper plan that has been drafted in order for it to get sold. तो यहाँ पर out of these three conditions, the last condition कि the subsidiary had been acquired with the intention to sell is fulfilled, and thus it will be classified as a discontinued operation in the consolidated financial statements for the year ended 31st of December 14. We can further see that actually ये कमिट कंक्लूजन पे आने से पहले वी विल ये कंक्लूजन को अपन नीचे डाल के रखेंगे, लेकिन बीच में अपन कुछ कुछ चीजें बोलेंगे कि Hummings company immediately began to seek the buyer, and therefore the commitment of the management to sell the asset can be seen because there is an active involvement to locate the buyer. Then, then though the bar was located in August 14, but due to unforeseen legal dispute over contingent liability disclosed in Coever Company's financial statements, the sale did not take place. The sale is though expected to be completed in early 15 is after the year end. Is after the year end. Assets can still be classified as held for sale after the year end if the two conditions are met. That is, the management that the events that have taken place that have caused the delay were outside the scope of the management, and the management is still committed upon the sale. Therefore, we can say that at 31st of December 14, the asset or the subsidiary can be classified as a held for sale and or discontinued operation and discontinued operation. इतना बोल देंगे. कर देता हूँ तरीके. आंसर चेक करते हैं. क्वेवर कंपनी देखो, स्टार्टिंग के 5 चीजें बिल्कुल सही बोली है. यहाँ से मैं पढ़ना चालू करता हूँ क्योंकि ये सब चीजें सेम ही होंगी. द सेल हैज नॉट टेकन प्लेस विद इन 12 months ऑफ एक्विजिशन, हाउएवर द एक्सेप्शन इज परमिटेड व्हेन द, ये देखो द एक्सेप्शन की इन्होंने यहाँ पे बात कर ली. द सेल इज स्टिल deemed to be highly probable and the delay was caused by events which were unforeseen and beyond the control of the management. The sale is still expected early 15 and the legal dispute was unforeseen. So this exception seems applicable. As such, Quaver should be classified as a disposable group held for sale. Quaver company should initially be measured at fair value less cost to sell, with any subsequent decreases in fair value less cost to sell taken to consolidated profit or loss. It appears clear that management was immediately committed to sell. Hummings did not wish to have an active involvement with the activities of the Quaver. तो मतलब वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं हुए Quaver के साथ किसी भी चीज को लेके. Quaver is therefore a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. In accordance with IFRS 5, Quaver should be presented as a discontinued operation, and so its earnings for the year must be disclosed separately in the consolidated statement of profit or loss. मैंने ये सब एक ब्रेथ में इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सब अपन ने वही सेम चीजें इन्होंने बोली जो अपन ने भी बोली थी. अभी लास्ट चीज, हियर वी गो. A calculation and discussion of how the bond should be accounted for in the financial statements of Hummings Company as at 31st of December 13 for the year ended 31st of December 14, including any impairment losses. On 31st of December 13, Hummings Company purchased the 10%, 10 million 5% bonds in Stave Company at par value. The bonds are repayable on 31st of December 16 with an effective rate of interest is 8%. Humming's business model is to collect contractual cash flows over the life of the asset. At 31st of December 13, bonds were considered to be low risk, and as a result, the 12-month expected credit losses are expected to be 10,000. ओके, सो सबसे पहली बात, अच्छा ये बाद में 31st ऑफ December 14 से चालू होते, तो मैं सबसे पहले यहाँ तक आ जाता हूँ कि in the current scenario on 31st of December 13, Hummings company has made an investment in debt instruments by purchasing 10 million 5% bond in Stave Company at par value. Now, when the investment has been made in debt instruments, it is important for us to know whether it has been measured in at, एक minute, what is the measurement basis for it. The investment in debt instruments can be measured in accordance with IFRS 9 financial instruments on three bases. First is amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit and loss. In the current scenario, we can see, actually wait, amortized cost का क्या रहता है कि for it to be measured at amortized cost, the twin objectives should be fulfilled, which is
to fulfill the business model test and the contractual cash flow characteristics test. The business model should be to collect contractual cash flows and hold it till maturity. मतलब to hold it till maturity, ये उसका business model test होता है. और contractual cash flow characteristics test वो होता है कि according to the contract, the cash flows should be earned, which principally include uh, which include the principal amount of the loan and the interest outstanding on that loan over the period of time. ये होता है. दस इन द करंट से अपन इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे. ओसीआई में क्या रहता है, क्योंकि ओसीआई के अंदर खाली एक लाइन अपने को ऐड ऐड करनी है कि इज टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी एंड ऑल्सो सेल इट एज वी कैन व्हेन द प्राइस when the price increases. So, however, in the current scenario, we can see that Hummings company's business model is to collect contractual cash flows over the life of the asset. Uh, over the life of the asset. इतना ही बोला है ना. So therefore, it should be measured at amortized cost. Uh, हाँ, IFRS 9 financial instruments allows us to create a loss allowance for investment in debt instruments measured at amortized cost and through fair value and OCI. The loss allowance can be created on two bases. First is significant losses or significant risk, एंड सेकंड इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क. मतलब एक में देर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क, एक में देर इज सिग्निफिकेंट रिस्क. व्हेन देर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क, तो उस टाइम पे द क्रेडिट अलाउंस कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज जो इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है. एंड व्हेन इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, तो उस टाइम पे द लॉस अलाउंस इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज. यहाँ पर 12 मंथ्स है तो मतलब देर इज लो रिस्क, इसलिए इन्होंने 12 मंथ्स के बेसिस पे किया हुआ है. सो देयर फोर द the carrying amount of the loan in the financial statement should be 10 million minus 10,000. तो वो देख लो कितना होता है. 10 million तो होता है कितना, 1 लाख. हाँ, -10,000 विच शुड बी 9.99 million. तो 9.99 million शुड बी द कैरिंग अमाउंट एज एट 31st of December 13. ठीक है ना. अभी आते हैं ऑन 31st of December 14. Stave company paid a coupon interest. However, at that date, the risk associated with the bonds were deemed to be increased significantly. And when the ये risk associated with the bonds are increased significantly, the 12-month expected credit losses won't work. We have to use the lifetime expected credit losses, and therefore there will be an increase in the loss allowance. This increase in loss allowance is being recognized in the profit and loss. ये अपन बताएंगे. फिर the present value of the cash shortfalls arising on the default in the year of 31st of December 15 is 4,62,963. The probability of default is 3%. And the present value of the cash shortfall arising on default on 31st of December 16 is 68,58,710. एंड द प्रोबेबिलिटी इज 5%. तो अभी अपन पता है क्या करेंगे, इस 4,60,000 को 3% से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 68 lakhs को ये 5% से मल्टीप्लाई करेंगे. उन दोनों को ऐड करेंगे, वो अपना लॉस अलाउंस बनेगा और उसको अपन अभी अपने कैरिंग अमाउंट में से माइनस करेंगे. तो अभी वो कर लेते हैं. 4,62,963 इंटू 3% जो मुझे देता है 13,88,8.89 and 68,58,710 इंटू 5% जो मुझे देता है 3,42,935.5. तो मैं जब इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे को मिलता है 3,56,824.39. So now I will minus this 3,56,000 का अमाउंट फ्रॉम माई 10 million का लोन. ठीक है. तो ये 3,56,000 का जो अमाउंट है वो मेरा अभी इसमें से माइनस होगा. सो व्हेन आई माइनस दिस अमाउंट फ्रॉम 10 million,
तो मेरे को मिलता है 9,64,300 3,755.61। क्या मुझे मालूम, एक मिनट। कैसा है अमाउंट है ये? 96,43,175.61, ये अमाउंट है। दिस विल बी द कैरिंग अमाउंट एज एट 31st of December 14। ये अपन लिख देंगे। और उसके बाद अभी और क्या पीएनएल में रिकॉर्ड करना है, ये भी मैंने बता दिया था अभी। हाँ, नाउ इफ टाइम परमिट्स, तो अभी अपने को amortized कॉस्ट 31st of December 13 के लिए ना, वो चार का टेबल बनाना है। वो चार का टेबल बनाने के बाद 9.99 के ऊपर हम लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% का। फिर 10 मिलियन के ऊपर लगाएंगे 5% का। और उसके बाद 5%, उसके बाद जो अपना क्लोजिंग वैल्यू होगा ना, वो अपना कैरिंग अमाउंट बनेगा। लाइक यहाँ पर उन्होंने आई थिंक वो चीज की होगी, मैं बस चेक कर लेता हूँ। उन्होंने टेबल नहीं क्रिएट किया है क्या? क्या हो गया? नो, इन लोग ने 9.99 मिलियन लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, दे डिडंट क्रिएट दैट टेबल। हाँ, सो एज आई सेड कि इफ टाइम परमिट्स तो ही ये सब करना है, बकचोदी करनी है। सो बिजनेस मॉडल अभी पढ़ना चालू कर देते हैं। देखो, बिजनेस मॉडल के हिसाब से amortized कॉस्ट पे करना चाहिए, ये अपन ने बता दिया। फाइनेंशियल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू विच इज इक्वल टू बी 10 मिलियन। उसके बाद IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स एंटिटीज टू calculate expected credit losses for investment in debt instruments which are measured at amortized cost or fair value through OCI। ये भी अपन ने बिल्कुल सही से बताया था। तो ऑन एक्विजिशन बॉन्ड्स आर लो रिस्क, तो इसको 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बेसिस पे रिकॉर्ड करना है बराबर से। हमिंग्स कंपनी शुड देयरफॉर रिकॉग्नाइज लॉस अलाउंस ऑफ 10,000 एज एट 31st of December 13। दिस विल बी एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस एंड अ सेपरेट लॉस अलाउंस क्रिएटेड। द अलाउंस इज नेटेड ऑफ 10 मिलियन बॉन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हमिंग्स। तो ये देखो, इनको 9.99 मिलियन जैसा हमने बोला था वैसा ही इनको आया अभी। हाँ सी, ये देखो इन्होंने ये चीज यहाँ पे कवर की है। इंटरेस्ट इनकम एट द इफेक्टिव रेट ऑफ 8% शुड रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट और लॉस एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट 10 मिलियन। तो उन्हें 10 मिलियन के ऊपर 8% चार्ज किया, नॉट 9.99 मिलियन, ऑन 10 मिलियन दे चार्ज इट। हम्म। The coupon interest of 5 lakh is deducted from the carrying amount of the bonds. This means that the bonds would have a carrying amount of 10, uh, 10.3 million, basically 10.3 million at 31st of December 14, before considering an impairment issues. At 31st of December 14, there has been a significant increase in credit risk. तो फिर उसके बाद हमिंग का देखो, उन्होंने लॉस अलाउंस क्रिएट करना था, तो उन्होंने लॉस अलाउंस क्रिएट कर दिया। लॉस एक्चुअली ना, ये देखो इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे लिखा है कि 10,300 10.3 मिलियन का क्रिएट होना चाहिए था। हाँ, राइट राइट राइट। ऑन 2014 ही ये 10.3 मिलियन क्रिएट होना चाहिए था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 31st of December में क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने परचेज ही 31st of December 13 को किया हुआ है। गेट इट? सो इसीलिए ये चीज 14 के ईयर एंड में 10.3 मिलियन की दिखेगी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। वो मैं एक बार मिस कर दिया था। दिस मीन दैट हमिंग्स कंपनी शुड मेक एन अलाउंस टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम, वो ठीक है। डिफॉल्ट ऑफ अलाउंस इज रिक्वायर्ड, तो देखो ये इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया। 3,56,825 जो अपने को भी आया था। फिर यहाँ पे देखो, द एक्सपेक्टेड लॉस शुड शुड बी डिक्रीज शुड बी इंक्रीज टू 3,56,000 विद एन एक्सपेंस रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस। हाँ, अपने को जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वो अपने को 3,56,824 का नहीं, 3,46,000 का करना है, क्योंकि 10,000 का हमने ऑलरेडी किया हुआ होगा, तो वो इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है ऐसे। Then the net carrying amount of bonds reported in the statement of financial position as at 31st of December 14 would be 9। हाँ, ये देखो, सो दैट वन थिंग वी गॉट रॉन्ग कि अपने को अपने 10 मिलियन में से माइनस किया था अपने को। 10
0.3 मिलियन में से माइनस करना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैलकुलेट दैट 31 दिसंबर 14 का ईयर एंड 10.3 मिलियन। आई सेड कि अगर टाइम अलाउ करता है तो वो टेबल बनाना है, बट ऐसा नहीं है, वो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें हमारा कैरिंग अमाउंट देगा, उससे हमें वो लॉस अलाउंस माइनस करना है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है ना? फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।